two-day digital workshop on digital transformation of education in JNK Vision 2030. I am Huzaifa and I will be accompanying you as your host for the next 2 days. First off, I'd like to thank IIEDC NIT Srinagar, Move Beyond, a startup of NIT Srinagar, and UNICEF for coming together and organizing this workshop. I further extend my gratitude to Deloitte for being the knowledge partner for the event. So far as this digital workshop on transformation of education is concerned, let me tell you, digital technology is, I personally believe, it's one of the major transformational tools in the world today. We have always thought of universal access, equity, equitable development, and many other parameters. If you can see today, right from the ground, the digitization, not only in education, even in the governance, has eased the life of people, like anything. And let me tell you, my dear colleagues, I am also working on a technology which I will be discussing later on, and JNK Science and Technology Department is funding that project. I have a lifelong dream of digitizing the entire activities of the world, like we have the Nifty 50 stock index. So that by sitting at home, for example, a director of a hospital would know how many patients have entered, how many patients have left, who has been given what type of medication, how many points of blood have been donated by somebody, how many operations have taken place. And likewise in governance, I want to digitize how many grievances have been filled, how many have been addressed, and how many are pending, and which sector has most grievances, and like that of economy. Today here we are to discuss a very delicate issue and very relevant issue to the section of the society which becomes future of our society, that is children. And this should be taken to the utmost seriousness to build a system to utilize digitalization of education in our education system. We have to see the life cycle of a system. If we build a system, we have to see its life cycle. Life cycle means whether it will last for 50 years, 20 years, 30 years. We must see, sometimes we shift from, we make changes in our system without going its analysis, results, consequences, etc. Sometimes we shift winter session, sometimes we shift to the spring session. This we should not do in a hurry. Please understand that education is a very delicate issue. I have worked significantly for a very long time in the education sector, both as Director School Education Jammu and also as Director Technical Education, which now is called the Skill Development. I have also worked very long in the employment and labour sector, so I also know the employment situation in JNK. I think what is very critical is this particular project funded by UNICEF is a very, very significant project, and its importance cannot be underrated by in any possible way. The digital transformation of education is a very important area for India. You know, our country, the gigantic size that India has, in terms of the population and the educatable population, is more than perhaps the entire European countries together, or all the African continent together. We have been developing at a very fast pace, and at this point of time, we are targeting a 5 trillion economy by 2025, another 3 years, and a 10
trillion economy by 2030. And the only department or only sector which can make it happen is your sector. Now, we also know that there are some important aspects. We spend more money in school education or technical education or in higher education than most of these European countries together. I think digitization is very important to bring about the transparency, accountability, and efficiency. So I would like to see that the government has already taken various steps, especially in the civil secretariat. The system has been shifted from the normal routine kind of correspondences to the e-filing. So e-governance is already in place, and I would like to say that I being the part of the system, it has brought about efficiency in the system. The every file or every correspondence is being tracked on minute-to-minute basis, where it has gone, how it has been disposed, and it's very transparent now. जिस तरह आपको पता है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जेएन का वो इट कोलैबोरेट्स विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अभी आपने कोविड के दौर में देखा कि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, खासतौर पे जो ऑनलाइन क्लासेस का पैटर्न है, उसमें बच्चों तक एक्सेस पहुंचाने के लिए डिस्पाइट द फैक्ट द स्कूल्स वर नॉट फंक्शनिंग, गवर्नमेंट कंटिन्यूसली अलाउड एंड एक्सेस द चिल्ड्रन विद एजुकेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इस पर एनआईटी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। एनआईटी श्रीनगर ने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया है और इस प्रोग्राम के तहत एक मूव बियॉन्ड नाम की एनजीओ है। तो ये ट्राई पार्टी स्टार्टअप है जिसके अंदर इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में, जैसे चाहे हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चाहे हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, चाहे बिग डेटा की, उसको यूटिलाइज करके किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। आपको पता है कि जो हमारा बच्चा है किसी रिमोट पसमंदा इलाके में है, चाहे वो त्राल में है या दूसरे इलाके में, वहाँ पर उसको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ऐसा भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें वहाँ टीचर सरकार के पास अवेलेबल ना हो, तो उसका कंटेंट जो है वो श्रीनगर से या किसी और जगह से बीम किया जा सकता है। इसके अलावा जो उनका बच्चों का इवैल्यूएशन है या उनकी जो क्वेरीज क्लियर करनी है, जैसे नीट के बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई क्वेरी क्लियर करनी है, तो कुछ उस्ताद बैठ सकते हैं श्रीनगर में या किसी स्टूडियो में दिल्ली, और वहाँ से भी वो क्लियर कर सकते हैं, जिससे आप हर एक बच्चे तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो कितना भी दूर गांव में बैठा है, यू कैन रीच अप टू हिम, और वो बच्चा हर एक रिसोर्स एक्सेस कर सकता है। एंड दिस वर्कशॉप इज टू मेक अ प्लान हाउ टू अचीव दैट in reality. We are open to collaborations, partnerships, we are open to share our resources even. So we are just a call away. You can just Google Move Beyond and that is done. Just Google it and you can connect us anywhere. And so far as the message is concerned, I would say कि यार जितना भी हो सके digitally खुद को empower करो, digitally learn the tools. You will get immense, amazing resources online, on internet if you know how to use the digital technology. सो अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में पीछे हैं एंड अगर आप कितना भी लिटरेट है, यू आर द हाफ लिटरेट इन टुडेज वर्ल्ड. डिजिटल लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ योर ओवर एजुकेशनल प्रोसेस एंड नो वन शुड लैग बिहाइंड. मेन ऑब्जेक्टिव जो इस प्रोग्राम का है कि एक सिनर्जी कायम की जाए बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स, और जो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है विच इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वाइटल इशू ऑफ टुडे, उस पर हम बात करें. तो इसलिए हमने यहाँ पर इस 2 दिन के वर्कशॉप में अलग अलग एजुकेशन सेक्टर के लोगों को, टीचर्स को और एक्सपर्ट्स को, प्रोफेसर्स को इनवाइट किया है. सो हमारा यही काम होगा कि एक डॉक्यूमेंट, विजनरी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करें ताकि हम ये थोड़ा सा समझ सकें, और वी वांट टू स्टडी द इकोसिस्टम ऑफ डिजिटलाइजेशन इन JNK.